Hello, guys. Good evening to the Cricket Next Live. It's Sunday, the final doubleheader weekend of IPL 2025. In the first game of the afternoon, where Chennai Super Kings locked horns with Gujarat Titans, और उस मैच के हालात अभी कुछ ऐसे हैं कि Chennai Super Kings are cruising towards a great victory. And later in the evening, Sunrisers Hyderabad will lock horns with Kolkata Knight Riders in New Delhi, जिसका टॉस थोड़ी ही देर में होने वाला है. We'll speak about both the matches, who wins the first game between Chennai Super Kings and Gujarat Titans, and who wins the toss in the SRH versus KKR fixture. How will the teams will line up? Who will be the players in the playing 11? Who will get out? And who will be all among the impact subs? इन सारे चीजों के बारे में हम बात करेंगे. And joining me today in this discussion, we have Amar Panikar, our colleague. Good evening, Amar. Good evening. और पहले मैच की अगर बात करते हैं तो CSK has caused very surprising turnaround. GT, one of the teams who made it to the playoff qualification, are biting the dust for the past two games, और ऐसा ही आज कुछ उनके साथ होने वाला है, though the match hasn't ended yet. But speaking of the next game, where Sunrisers Hyderabad takes on Kolkata Knight Riders in rather inconsequential consequential game, जिसका अब कोई मतलब रहा नहीं है, but they will look to end the tournament, end the season with a better point, better point, with better net run rate. So if you look at Sunrisers Hyderabad, it has been, I would say they fell flat on their faces, because there was a huge buzz when the seasons began, that they will be the first team to score at least 300 runs in the IPL history and become the first one to do so in the tournament history. But in search of 300, they found themselves struggling to even score 150. But still, they won their last game against RCB, where RCB had one chance to make it to seal one place among the top two, but they messed it up completely. And Sunrisers Hyderabad, they came out with flying colors, riding on Ishan Kishan's unbeaten 94. What do you expect today, especially both the teams are playing at a neutral venue, so to speak? Yeah, I mean, they're playing at the Arun Jaitley Stadium in Delhi, so I'm hoping that we get to see a run fest because both teams have a fairly powerful batting order, and I hope that these guys can really come to the party and give us one entertaining fixture in the league stages. Before we shift our focus to the playoff stages. Yes, like you said, this game is inconsequential more or less, but I'm sure these two sides will have some sort of a rivalry going on, considering that these two were the finalists from the last two seasons. I mean, last season, sorry. So, yeah, I think they will have some beef to settle, especially for the Sunrisers. But yeah, I mean, they have been finding decent form in the past few games. So, I think they will fancy the chances today. And considering KKR have been not so active in terms of their games, so I think they will look to uh, capitalize on that and ensure that they can get a big win to close out their campaign on a big positive. Absolutely, and the big news coming from Arun Jaitley Stadium in Delhi, that Sunrisers Hyderabad have won the toss and they have elected to bat first against Kolkata Knight Riders. Well, due factor has been in and out in Delhi, and but that hasn't been decisive. But overall, the tracks at the Arun Jaitley Stadium have been absolute belter. लास्ट मैच की बात करें, जहां पे दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटन, इनफैक्ट लास्ट टू लास्ट गेम, लास्ट टू लास्ट मैच जहां पे दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस का मैच हुआ था, वहां ऑलमोस्ट 400 रन स्कोर हुए थे. पिछला मैच जब राजस्थान रॉयल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स का मैच हुआ था, वहां पे भी क्लोज टू 400 रन स्कोर हुए थे. एंड टुडे वंस अगेन Sunrisers Hyderabad are coming to Delhi. They will host Kolkata Knight Riders. And though they had quite an off-season, underwhelming season, but still we cannot write off what the firepower they are carrying right now with their, with their in their camp. Do you still think now they have, since they have opted to bat first, uh, they will look to go all guns blazing against Kolkata Knight Riders, Amar? I think that is the case for the opening pair, Travis Head and Abhishek Sharma. But
I think Ishan Kishan also, he's been amongst the runs, especially in the last game, and I think he will look to maybe take his time for a few deliveries and then get going not too long after. So yeah, I mean, I think we can expect a typical SRH brand kind of batting, I would say. So, but then again, that same approach has pretty much cost them this season. So I think they would ideally would want to assess the conditions initially and then play according to that and get a score that the conditions dictate. So I don't think they would want to be as reckless as we have seen in the past few games. But that being said, that is the brand that really lit up the SRH franchise altogether. From last season. So yeah, I mean, I expect them to be fairly aggressive, and they have a big batting order as well. That top four itself is pretty much stacked. You have Abhishek Sharma, you have Travis Head at the top, then you have a Ishan Kishan, and then you have a Heinrich Klaasen as well. All four are like pretty much proven performers at the at the highest level. So yeah, these guys will definitely have to go big. Should SRH have a big chance in getting the W in the final game? Absolutely, and you named Henrik Klassen. He has been one of the crucial cog in SRH in the SRH camp, because the way they kicked off their campaign, that game against Rajasthan Royals at the Rajiv Gandhi Stadium in Hyderabad, where they scored almost 270 odd runs, where Ishan Kishan smashed his maiden IPL 100, and they just went off color for the entire season. And then this 9-day break due to certain reasons happened, and once the IPL restarted, they are back there, back to the winning ways. And on that note, I would like to read out what Pat Cummins said after winning the toss. Well, Pat Cummins said, we have just clicked. The bowlers have been sharp and the batters have played to potential. Always hope to find momentum early. The good thing is we know we can keep this squad going forward. We have played well last 3-4 games. We'll try to find that consistency. And so to speak, team as the last games, there are no changes in the SRH camp. But speaking of that, we have clicked. Don't you think it's too late to make such a statement, Amar? I mean, yeah, I get the point as to why that you might think it's too late, but again, you don't want to be a captain and admit that you have conceded the defeat and whatnot. At the end of the day, you want to win as many games as possible. Uh, so I think the approach here is that basically, fine, we have lost the season, but we are not going to back down essentially. So I think that's what Cummins might be expecting his players to bring forward altogether. So yeah, I mean, yes, it's a bit too late that they found their consistency, but yeah, then again, they could also want to decide who they want to keep, who they want to get rid of for the next season as well. So maybe this game could give a bit more insight to that as well. वेल ऑन दैट नोट एक नजर डालते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेइंग 11 पर। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, जिनके बारे में अभी अमर ने बताया कि सलामी जोड़ी काफी इनसे उम्मीद की गई थी इस सीजन में कि कुछ अच्छा करेंगे, कुछ धमाकेदार करेंगे, लेकिन ट्रेविस हेड हैज दिस सीजन हैज बीन अ कंप्लीट फेलियर for Travis Head. And though Abhishek Sharma scored a century, got a 50 here and there, but still that consistency lagged big time. Then Ishan Kishan, obviously, he started the campaign, he started the season with a century, scored a 94 not out in the last game against Royal Challengers Bengaluru, but बीच का जो stretch था, that has been a complete disappointment for Ishan Kishan, the wicketkeeper batter. Then Henrich Klaasen, Aniket Verma, Nitish Kumar Reddy, another failure in the another chink in Sunrisers Hyderabad's armor, I would say this season. Nitish Kumar Reddy, क्योंकि जिस तरीके से लास्ट ईयर इन्होंने अपना डेब्यू किया आईपीएल में, एंड देन द वे ही केम टू द फोर, दैट वाज phenomenal. He fast tracked his career into career and made it to the Indian team both in white and red ball setup. But coming to this IPL 2025, it has been a little bit of a disappointment for Nitish Reddy as well. But moving ahead, Abhinav Manohar, Pat Cummins, Harshal Patel, Jaydev Unadkar, Ishan Malinga. Well, Amar, do you think it's apt to keep an unchanged 11, especially when you play an inconsequential game
and you know that you have nothing to lose, only to gain some points if you come out victorious from this game. I mean, that is a valid point that, since it's an inconsequential game, why not give some game time to some of the guys that have been in the bench for the entire season? But I think the intent here is pretty clear that they just want to win at the end of the day and get as many points as possible and end the season on a positive note. So I think that is the main intent behind this selection, and also uh, some of the guys in this playing 11 haven't really lived up to expectations. So these guys would also want to make sure of their chance and get some performances under their belt so that they can stay with the franchise the next season as well. Absolutely, and that has been the story pretty much, summarized by Amar in very briefly, because that has been the case of the first few games and then the last few games, and meanwhile, that has been a massive, massive disappointment, because as Amar stated rightly in the beginning of this live session कि ये आज का मैच is a rematch of IPL 2025 final, sorry IPL 2024 final, जहाँ KKR वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद का गेम चेन्नई में खेला गया था और वहां पे कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत हासिल की थी और चैंपियन बने थे. बट बोथ द टीम्स हैव haven't played like champions. Neither Kolkata Knight Riders played like the defending champions, nor Sunrisers Hyderabad played like the runners up. They were far, far away from what they endured last season. Too scratchy, too rusty in their approach, looked completely, clueless about what they are doing on the field. And that's pretty much, also raises a concern as far as the management is concerned, because they have kept their core team intact and spent a huge, huge amount of money, especially behind Pat Cummins and Travis Head, and for that matter, Abhishek Sharma. But now, as we say that all is well that ends well. So Sunrisers Hyderabad will also be hoping for the same, that they at least end their campaign, since they are playing their last game today. तो उनके उनकी उनकी कोशिश ये रहेगी कि सीजन को एक अच्छे नोट पे, एक अच्छे रिजल्ट के साथ खत्म किया जाए और अगले साल पूरी तैयारी के साथ वापस आए. Well, moving ahead, let's have a look at the playing 11 of Kolkata Knight Riders. Well, there it is. Quinton de Kock is back alongside Sunil Narayane, Ajinkya Rahane, captain Manish Pandey, Rinku Singh, Andre Russell, Ramandeep Singh, Vaibhav Arora, Harshit Rana, Andrik Norkia, and Varun Chakravarti. Well, Amar, the first, the highlight of this playing 11 is the return of Quinton de Kock, because in the past few matches, Kolkata Knight Riders were adamant to have Ramanullah Gurbaz right there at the top of the order. But again, neither did he do something special in the last season. Still, Kolkata Knight Riders, kept their faith in him. And so was the story this season as well. कुछ खास इस बार उन्होंने कर नहीं पाया. Though he is wonderful, wonderful batter, a wonderful stroke player, and a hard hitter as far as the white ball game is concerned. But coming to IPL, that magic has been missing of Rahmanullah Gurbaz, and replacing him with Quinton de Kock, how good or bad the move is, Amar? I mean, I think Quinton de Kock did win them one game by scoring a century this season. But that being said, someone like a Ramanullah Gurbaz hasn't. Uh, well, initially he didn't have much of a chance to warrant his selection, and he got that run. But let's be honest, he didn't really make that much of an impact during that run that he had recently. So I mean, it's fair to say that these someone like a Dicock brings you a lot of experience. Playing in the IPL, playing T20 cricket across several leagues, and also, yeah, I think they just want that experience at the top, and they should have persisted with him at the top as well for the entire season. So it's basically comes to that, and I think they've just realized that maybe their combinations altogether haven't really clicked out for the entire season, if I'm being honest. And it just goes to show how their season has been for this year.
Absolutely. And on that note, also let's welcome Animesh. Animesh, good evening. स्वागत है आपका क्रिकेट मैच के लाइव सेशन में और आपसे बात करना शुरू करूंगा स्पोर्ट्स फैन के कॉमन के साथ. Do you think this KKR 11 is an indication that Venki Iyer will be released next auction? Animesh. लगता नहीं है मुझे कि ऐसा होगा कि वेंकटेश अय्यर को यहाँ पर रिलीज करने की सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि और बहुत लंबे समय से इस स्क्वाड का पार्ट रहे हैं. हालांकि कुछ भी हो सकता है आईपीएल के इस स्क्वाड में, क्योंकि अजिंक्य रहाणे लीड कर रहे थे इस सीजन में. क्या अगले सीजन वो लीड करेंगे? एक्सपेक्टिंग हिज एज, एम एस धोनी के अलावा कोई ऐसा प्लेयर मैं इमेजिन नहीं करता हूं जो इतनी लंबी उम्र तक, इतने लंबे सालों तक किसी भी टीम को लीड कर सकते हैं. तो यहाँ पर ये बड़ी समस्या है. लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि वेंकटेश अय्यर पर जिस तरीके का दांव खेला था, हालांकि हो सकता है कि उनको रिलीज किया जाए, जो कि अक्सर ऑक्शंस में टीम करती आई हैं, कि उनको रिलीज करके जिस कीमत में खरीदा था, लगभग 23.5 करोड़ के आसपास, वहां पर उनको उस कीमत में ना रिटेन करके दोबारा रिटेन करने की कोशिश करें और इससे कम कीमत में अपने टीम में वापस लेकर आए, और कह सकते हैं पर्स में अपनी जो बची हुई रकम है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे वो और प्लेयर्स को रिटेन कर सकें और अपनी स्क्वाड को मजबूत कर सकें. तो ये कोशिश जरूर होगी यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स की. और मुझे लगता है इस फेरिस्त में वो कई सारे चेंजेस कर सकते हैं, जहां पर शायद आंद्रे रसल से भी वो परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली है इस सीजन, और आंद्रे रसल को लेकर भी उनके मन में काफ़ी सवाल होंगे कि केकेआर मैनेजमेंट के मन में, और उनको भी लेकर चीज़ें कह सकते हैं बदल सकती हैं कि वो वहाँ पर क्या चाहेंगे कि आंद्रे रसल के साथ क्या करना है. क्योंकि सुनील नारायण के अलावा एक ओवरसीज प्लेयर के रूप में जिस तरीके से यहाँ पर आंद्रे रसल की इससे उम्मीद थी यहाँ पर पूरे केकेआर मैनेजमेंट को, लेकिन वो परफॉर्मेंस आई नहीं है. तो यहाँ पर लीडरशिप रोल को, टॉप ऑर्डर को लेकर, फिनिशर्स को लेकर कई सारे सवाल हैं जिनकी कह सकते हैं, इन सवालों का जवाब हो सकता है कि अगले ऑप्शन में मिले. और मुझे लगता है उसको लेकर सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी यही होगी कि आप प्लेयर्स को रिलीज करें, और अगर आप चाहते भी हैं उन प्लेयर्स को रिटेन करना, तो कम कीमत में उन्हें अपनी टीम में वापस लाने की कोशिश करें. बिल्कुल. और आपने अजिंक्य रहाणे के बारे में बात की अनिमेश. अपने दर्शकों के साथ एक जानकारी मैं ये साझा करना चाहूँगा कि इस सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स के टॉप स्कोरर रहे हैं अजिंक्य रहाणे. और अगर हम मोस्ट रन इस सीजन के देखते हैं तो अजिंक्य रहाणे 16वें नंबर पे हैं, यानी कि नंबर 1 से लेकर नंबर 15 तक कोई भी कोलकाता नाइट राइडर्स का बैटर नहीं है. और जबकि in comparison to what I just spoke, Kolkata Knight Riders have some of the great hitters of the ball, be it Sunil Narayan, be it Rinku Singh or Andre Russell. ये सीजन कंप्लीट फेलियर रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, जिसका खामियाजा शायद अब उनको भुगतना पड़ रहा है, बिकॉज रिजल्ट उनके सामने है. अगर टीम एफर्ट होता स्टार्टिंग से ही तो शायद आज वो बॉटम 4 में ना होके टॉप 4 में होते. बट इट्स नेवर टू लेट. जैसा कि कहते हैं, आज आखिरी चांस है उनके पास, जिसके बाद वो अपना एक मैच जीत कर सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर वापस से अगले साल की स्ट्रैटेजी पे काम कर सकते हैं. So on that note, let's move on to the match result of the previous game, the afternoon match between the Chennai Super Kings and the Gujarat Titans. Well, वो match हो चुका है खत्म, and Chennai Super Kings have defeated Gujarat Titans by 83 runs, and they have ended their campaign with on a victorious note. 83 रन की विक्ट्री है. गुजरात टाइटंस का खेल खराब कर दिया. लगातार दूसरी टीम प्लेऑफ में क्वालिफिकेशन होने के बाद से गुजरात टाइटंस ने एक भी मैच नहीं जीता, और अब उनका प्ले टॉप टू फिनिश, आई थिंक इट्स लुक वेरी टफ, गिवन द फैक्ट दैट कि अभी मुंबई इंडियंस को एक और मैच खेलना है पंजाब किंग्स के साथ. अमर, what's your take on, can गुजरात टाइटंस मतलब कुछ Yeah, so basically, whoever is winning the game between Punjab and Mumbai, they will have the chance to take the top spot essentially, and Gujarat will just have to bank on RCB, who have their final league stage fixture against Lucknow Super Giants.
and basically Gujarat would want RCB to lose their game as well. So that is the only plausible scenario where Gujarat can hold that top two spot. So I mean, yeah, it is disappointing considering that they were well ahead in that race for the top two spot, and then suddenly they crumble in the last two games. There will be concerns as well going into the playoffs because you don't have someone like a Josh Butler who has been a key player in that top order. So yeah, it's definitely not the way you want to head into the playoff stages. But that being said, sure they might be missing out on a top four, but I mean top two. But yeah, I think they will fancy the chances nonetheless because they are a pretty solid side. They haven't really been too inconsistent in that regard. So I think I'm expecting them to bounce back, in the playoff stages. एब्सोल्युटली। और यहाँ पे जो अगर मैच नंबर 68 इनकॉन्सिक्वेंशियल है, तो मैच नंबर 69 और 70 में सबकी आंखें नजरें रहेंगी, बिकॉज पंजाब किंग्स एंड मुंबई इंडियंस विल बी लॉकिंग हॉर्न्स ऑन मंडे इन जयपुर, एंड देन लखनऊ सुपर जायंट्स विल बी होस्टिंग रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एट देयर होम ग्राउंड इन लखनऊ ऑन ट्यूसडे। और अगर कल मुंबई इंडियंस जीत जाती है, देन दे विल बी अप देयर विद 18 पॉइंट्स। बट अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु भी जीत, और इनफैक्ट मतलब उससे पहले अगर पंजाब किंग्स की कल विक्ट्री होती है, तो दे विल बी राइट अप देयर विद 19 पॉइंट्स। एंड इफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विंस द game against Lucknow Super Giants, their last game, the match number 70 of the IPL 2025, तो फिर पिक्चर साफ है कि 1-2 में फिर पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में से दोनों दोनों होंगे, बट 1-2 की पोजीशनिंग नेट रन रेट पे डिपेंड करेगी। That's why, due to all these calculations, the upcoming games on Monday and Tuesday are going to be very, very, crucial, given the fact that how the top four will shape up. But before we move on, let's have a look at the performances of both Chennai Super Kings and Gujarat Titans in the IPL 2025 match number 67. Well, Chennai Super Kings won the toss in scorching Ahmedabad heat afternoon game, and as Ravi Shastri said, a furnace has been turned on in Ahmedabad। और इतनी गर्मी में खेलने के बाद भी चेन्नई सुपर किंग्स ने क्या बैटिंग करी है आज। मतलब अनिमेश, मैं ये सोच रहा हूँ पिछले कई दिन से कि जितने भी टीमें 5th पोजीशन से नीचे हैं, खासकर 8, 9, 10 वाले, 7, 8, 9, 10 जो भी, इस ब्रेक के बाद जो 9 दिन का ब्रेक रहा है, उसके बाद ये किसी अलग ही लय में नजर आ रहे हैं। आप चाहे सनराइजर्स हैदराबाद को देख लीजिए, आप चेन्नई सुपर किंग्स को देख लीजिए, और गुजरात टाइटंस का इस तरीके से लगातार 2 मैच हार जाना, जिस बारे में हम इतने दिनों से बात कर रहे थे कि किसी ना किसी मैच में तो ऐसा होगा जब उनके टॉप 2, टॉप 3 फॉल्टर करेंगे, और जब दारोमदार उनके मिडिल ऑर्डर पे आएगा, तब कैसा वो परफॉर्म करेंगे, ये देखने दिलचस्प होगा। और पिछले दोनों मैचेस में हमने देखा कि किस तरीके से जब शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जॉस बटलर आउट हो जाते हैं, तो मिडिल ऑर्डर जो है वो पूरी तरीके से फिर क्लूलेस हो जाता है। बिल्कुल, ये सवाल गुजरात टाइटंस के साथ इस पूरे सीजन में जुड़े रहे हैं कि यहाँ पर उनको सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी जो उनकी रही है वो खासकर उनके टॉप 3 बैटर्स पे रही है, जहाँ पर साई सुदर्शन है, शुभमन गिल हैं, उसके अलावा यहाँ पर कह सकते हैं जॉस बटलर का नाम है। लेकिन अब उनके लिए मुश्किलें इसलिए भी बढ़ेंगी क्योंकि प्लेऑफ्स में यहाँ पर जॉस बटलर उनके साथ नहीं होंगे। हालांकि पिछले मुकाबले में जब इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ इसी मैदान पर खेल रहे थे, तो वहाँ पर मिडिल ऑर्डर का साथ मिला था और वहाँ पर मैच जरूर 33 रन से हारे थे, लेकिन वहां पर एक अच्छी चीज ये देखने को मिली थी कि गुजरात टाइटंस के जो मिडिल ऑर्डर बैटर्स हैं उनका बल्ला खूब बोला था, और इस वजह से कह सकते हैं वहां पर थोड़ी सी अच्छी चीज देखने को मिली थी कि शाहरुख खान के बल्ले से वहां पर हाफ सेंचुरी देखने को मिली थी, सरफराज रदरफोर्ड का बल्ला भी चला था, तो वो एक अच्छे साइंस थे। लेकिन आज के मुकाबले में फिर से बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, जहाँ पर फिर से मिडिल ऑर्डर की जो खस्ता हालत थी वो फिर से आज देखने को मिली है। क्या सरफराज रदरफोर्ड हालांकि परफॉर्मिंग एसेट रहे हैं इस पूरे सीजन में, इम्पैक्ट सब के रूप में उनको खूब अच्छे से इस्तेमाल भी किया है गुजरात टाइटंस के मैनेजमेंट ने, लेकिन आज उनका बल्ला नहीं बोला, डग पर पवेलियन वापस लौटे। शाहरुख खान ने आज गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन किया, जॉस बटलर को वापस भेजा था, लेकिन यहाँ पर शाहरुख खान का बल्ला जो पिछले मुकाबले में जिस तरीके से 57 रनों की पारी खेली थी वो आज नहीं देखने को मिली। तो 15 गेंदों में 19 रन बनाकर पवेलियन वापस लौटे, तो एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। मुझे लगता है मोमेंटम लूज किया है, और इस बात को पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी
जो IPL 2025 का रिजम्पशन हुआ है उसके बाद से जिस तरीके की पंजाब किंग्स की परफॉर्मेंस रही है, गुजरात टाइटंस के साथ भी वही देखने को मिल रहा है कि आपका टॉप ऑर्डर अगर फेलियर हो जाता है तो वहां पर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, और उसका इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिला, खासकर पूरे जो रिमेनिंग बैटर्स हैं उन पर, और उस वजह से वो परफॉर्मेंस डिप होती हुई दिखी इस पूरे मुकाबले में। जी बिल्कुल वही है। और इस बारे में हम उन 9 दिनों के दौरान अक्सर बात किया कर रहे थे, जब भी हमने आईपीएल के रिलेटेड कोई भी लाइव सेशन हमने जब भी होस्ट किया, उसमें एक कॉमन पॉइंट ऑफ डिस्कशन यही था कि अब तक जो मोमेंटम जिन टीमों के साथ रहा है, स्पेशली जो टॉप 4 टीम्स के साथ, एक जिस लय से वो हर मैच जीतते जा रहे थे, खासकर आरसीबी को आप देख लीजिए कि एकदम अनयूजुअल आरसीबी, अनयूजुअल पंजाब किंग्स। पिछले कई सीजन्स आप उठा के देख लो, हालांकि आरसीबी ने पिछले 3 साल में 2 बार प्लेऑफ में क्वालिफाई किया, बट इस साल एक तरफा मैचेस जीत रहे थे, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। वैसे पंजाब किंग्स भी थे, बाहर हो घर हो, श्रेयस अय्यर की कप्तानी बहुत उम्दा रही। लेकिन टूर्नामेंट एक बार हॉल्ट हो गया तो किसी ना किसी टीम का मोमेंटम तो टूटना था। और दिलचस्प बात यह है कि जो टॉप में है उन टीमों के मोमेंटम में चेंजेस आए हैं, और बल्कि जो एलिमिनेट हो चुके थे या एलिमिनेट हुए रिजम्पशन के बाद, वो लोग, वो सारी टीमें मतलब अपना टॉप नॉच परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और उन्हीं में से एक टीम रही आज चेन्नई सुपर किंग्स, को सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म मेरे हिसाब से इस सीजन में मिला होगा, चाहे वो कप्तानी में फेरबदल ले लीजिए, या फिर धोनी की बैटिंग ले लीजिए, या फिर जब तक ऋतुराज गायकवाड़ थे तब तक उनकी बैटिंग ऑर्डर पे ले लीजिए। राहुल त्रिपाठी को ओपन कराना, वो भी एक मुद्दा था कि क्यों ऐसा कराया जा रहा है। और कुल मिला के चेन्नई सुपर किंग्स की जितनी भी स्ट्रैटेजी रही, उसको देखते हुए यही लग रहा था कि विजय भैया शंकर भी। हाँ बिल्कुल, विजय शंकर भी। और मतलब ऑक्शन स्ट्रैटेजी पे कई सवाल या निशान उठे, लेकिन जब से आयुष मात्रे आए, उर्विल पटेल आए, इन दोनों बैटर्स के आने के बाद से कुछ अच्छे पॉजिटिव साइंस आए। और उसके बाद फिर जो ब्रेक आया, और उसके बाद आज इस तरीके का मैच यहाँ पे परफॉर्मेंस चेन्नई सुपर किंग्स ने दिया। आयुष मात्रे ने 34 रन बनाए 17 गेंदों पे, 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। और इसी कड़ी में स्पोर्ट्स फैन का एक कमेंट आया, नॉट मेनी पॉजिटिव, बट सीएसके वुड बी गोइंग इनटू नेक्स्ट सीजन विद टू ब्रिलियंट प्लेयर्स इन रिप्लेसमेंट्स as Matre and Dual Bravis. Amar, I would like to take your comment on this. Ayush Matre, a 17-year-old guy, coming in as an injury replacement for the captain Ruturaj Gaikwad, and Dual Bravis coming in mid-season, and both of them, the way they have not only batted, but you see Dual Bravis fielding efforts. I mean, जिस तरीके से वो कैच लेते हैं फील्ड में, जो 100% हम लोग कंट्रीब्यूशन देते हैं, he is far far better than what he did in those limited chances what Mumbai Indian gave him a couple of I think yes, a couple of seasons back. So, do you agree with Sportsman that these are the couple of positives in Matre and Brevis that they will be, looking forward to take ahead in the next season? Yeah, definitely. And to add on to this, you also have someone like a Noor Ahmad as well, who has been in brilliant form as well with the wickets. Anshul Kamboj also, he looks like a decent prospect for the uh, long term for the franchise. And yeah, I think it's these four. Khalil also, he has had moments where he's been decent with the new ball. But obviously, he has a bit of things to work on with the rest of his game. But yeah, I mean, there are a fair bit of positives that the franchise can look forward to. It's just a matter of whether they are going to build on this or just keep relying on the same guys who may have dipped in terms of their performances. Someone like a Conway, today he has gone well, but let's be honest, throughout the season, he hasn't been performing as expected. So I think it's a matter of time whether these guys take that bold decision to ensure that this is the core that we want for the coming few seasons, and this is who the guys who we want to build on. So it's just a matter of whether they are able to take that bold step forward and move on from the legends that have played in the franchise before them. Absolutely, but once again, it's a matter of waiting and watching, क्योंकि मिनी ऑक्शन में किस तरीके से, किस स्ट्रैटेजी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ऑक्शन टेबल पर जाएगी, किन प्लेयर्स को रिलीज करेगी, किन को रखेगी। और आयुष मात्रे, जहां तक हमारा प्रेडिक्शन ये है, हमारा अजम्पशन ये है कि आयुष मात्रे को के साथ उनको सस्टेन करना चाहिए, बट स्टिल
जहां तक एक मेजॉरिटी बनी है, एक जो मतलब एक प्रेडिक्शन, ये मेजॉरिटी प्रेडिक्शन ये रहा है कि सीएसके आउट ऑफ द ऑल 10 टीम, सीएसके हैपन टू बी द फर्स्ट फ्रेंचाइजी जिसको सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आने वाले सीजन में अपनी टीम को चुनने के लिए. वेल, दैट्स इट फ्रॉम द फर्स्ट गेम, सीएसके वर्सेस जीटी गेम, वेयर Chennai Super Kings have won by a huge margin. And before we wrap up this session, let's also have a look at the points table because Chennai Super Kings का प्यार इस साल 10वें पोजीशन के साथ बना रहा. अनिमेश, एक बार जो उन्होंने 10वें पोजीशन से शुरू किया, और जबकि कैंपिंग की शुरुआत उतनी बुरी भी नहीं थी, मुंबई इंडियंस को उन्होंने हराया था, और आज देखिए मुंबई इंडियंस चौथे नंबर पे है, एक जीत से दूर है, जबकि वो टॉप 2 में फिनिश कर सकते हैं. और चेन्नई सुपर किंग्स की फिर वही कहानी जो 2020 के दौरान 2020 वाले सीजन में थी. हालांकि वो उस वक्त बॉटम में तो नहीं, एकदम बॉटम मोस्ट तो नहीं थे, लेकिन हाँ कुछ खास भी नहीं था. तो जो एक लेगेसी थी, क्या आपको लगता है कि इस पूरे सीजन में वो उन्होंने अपनी लेगेसी को खुद ही जो है तकलीफ पहुंचाई है? बिल्कुल, ये लेगेसी को यहाँ पे खुद ही डेंट किया है यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स ने, और इसके पीछे कई कारण हैं. जो पहला कारण है खासकर कि एक कप्तान अभी तक परमानेंटली ढूंढ नहीं पाए हैं. रविंद्र जडेजा को कप्तान बनाया था, तब वहाँ पर एंट्री हुई थी फिर से एमएस धोनी की मिड सीजन. ऋतुराज गायकवाड़, ठीक है मैं मानता हूँ इंजरी कंसर्न्स थे, लेकिन उसके बावजूद एमएस धोनी का वापस आना वो भी एक मेरे लिए सवाल खड़े करता है कि हर बार एमएस धोनी किस एज तक यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए वापस आते रहेंगे और उनके लिए चीज़ें करते रहेंगे. और ये बड़ा सवाल है कि इससे टीम पर किस तरीके का असर पड़ता है, क्योंकि लगातार इस तरीके के चेंजेस होते हैं तो एक बैलेंस नहीं बन पाता है. और देखिए यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स के फ्रेंचाइज को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि यहाँ पर 121 रन पर अगर आज मैच जीत जाते तो शायद यहाँ पर 10th पोजीशन पर खत्म नहीं करते, और आपको इन सिनेरियोस के साथ दो चार होना पड़ रहा है कि आप यहाँ पर लड़ किस लिए रहे हैं कि आप रन रेट के साथ साथ 10th पोजीशन पर खत्म ना करें. तो ये आपके मन में अगर सवाल आ रहा है और इस तरीके के कह सकते हैं सिनेरियो से आपको दो चार होना पड़ रहा है, तो आपको फिर से रीथिंक करने की कोशिश करनी चाहिए. और दूसरी बात है, इस स्क्वाड में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो मुझे लगता है अब T20 फॉर्मेट को कह सकते हैं उन्हें अलविदा कर देना चाहिए. रविंद्र जडेजा के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा कि T20 फॉर्मेट में अगर इंटरनेशनल लेवल पर वो अलविदा कह चुके हैं, हालांकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो T20 फॉर्मेट को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन रविंद्र जडेजा के बल्ले से वो कोशिश देखने को करनी, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने पूरे अपने करियर में तीसरे या चौथे नंबर पर बैटिंग नहीं की, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने उनको यहाँ पर इस सीजन में तीसरे चौथे नंबर पर बैटिंग कराई. तो ये दिखाता है कि आपके पास किस तरीके का कह सकते हैं कंसर्न्स हैं, किस तरीके के पास आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है. और ये आपके लिए एक सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि आपका ऑक्शन कितना खराब गया था, कि आपके लिए जो टॉप परफॉर्मर रहे इस सीजन में वो आपके दोनों रिप्लेसमेंट्स हैं, दो इंजरी रिप्लेसमेंट्स, आयुष मात्रे और देवल ब्रेविस, वो आपके इस सीजन के टॉप परफॉर्मर्स हैं. बल्ले से उनके रन निकले हैं जब उन्होंने यहाँ पर आईपीएल 2025 में आपकी टीम को मिड सीजन ज्वाइन किया है. तो आपको कह सकते हैं आईने में देखने की जरूरत है कि आपने ऑक्शन में किस तरीके की गलतियां की, किस तरीके से एक ही तरीके की चीज़ों के पीछे भागते रहे. और यहाँ पर जो उनका ऑप्शन में भी जो एक कह सकते हैं फॉर्मेट सेट रहा है कि पुराने प्लेयर्स को ज़्यादातर रिटेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन परफॉर्मिंग एसेट नहीं रहता है कोई भी प्लेयर, तो मुझे लगता है उससे आगे बढ़ जाना ही टीम की स्ट्रेटजी होनी चाहिए. लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स अभी तक इस चीज़ों पर नाकामयाब रही है. हालांकि देखते हैं कि क्या आज एमएस धोनी को लेकर क्या अपडेट आते हैं, वो सबसे ज़्यादा बड़ा कंसर्न है और मुझे लगता है उस पर ही स्विच करना चाहिए. बिल्कुल, एमएस धोनी इस वक्त अपने दर्शकों को बता दूं कि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बातें तो कर रहे हैं. हम अगर ऐसा कुछ बम फोड़ते हैं एमएस धोनी, तो हम जरूर अपने दर्शकों तक वो खबर पहुंचाएंगे. लेकिन आज माहौल ही कुछ ऐसा था. इनफैक्ट पिछले 2-3 दिन से माहौल ऐसा बना दिया गया है ब्रॉडकास्टर्स के द्वारा कि वन मोर टू गो, वन लास्ट वन टू गो, और इस तरीके से. हालांकि ये सीजन का एज अ कैप्टन एमएस धोनी का आखिरी मैच था, क्योंकि ऑब्वियसली अगले सीजन में ऋतुराज गायकवाड़ फिट होकर लौटेंगे और कप्तानी करेंगे. खुदा ना खास्ता उनको फिर से इंजरी हो जाए या फिर कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए जिसकी वजह से वो अनअवेलेबल हो या कुछ हो. बट प्रैक्टिकली देखा जाए और पॉजिटिवली सोचा जाए तो ऋतुराज गायकवाड़ कम बैक करके वापस से कप्तानी कमान संभालेंगे. लेकिन जिस तरीके से जो आज माहौल था कि क्या एमएस धोनी रिटायर हो जाएंगे, और
क्या लास्ट है उनका, और क्या फिर उनके आईपीएल फ्यूचर के बारे में क्या बातें बोल हैं, दिया क्या है यहाँ कहते पर 4-5 महीने हैं, अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं बताऊंगा आराम से सोच के। फिर से वो 4-5 महीने का एक फैंस को यहाँ पर कह सकते हैं एक दे दिया है कि अपडेट कि आपके पास 4-5 महीने हैं। मैं भी सोचूंगा, आप भी इंतजार करिए कि क्या थाला फिर से खेलेंगे अगला सीजन या नहीं खेलेंगे। तो कुल मिलाकर उन्होंने ये बड़ा अपडेट यहाँ पर दे दिया है कि एम एस धोनी आज के मुकाबले में तो शायद रिटायरमेंट अनाउंस नहीं करने वाले हैं। चलिए, एक तरीके से अच्छी बात है ताकि हमारा फोकस जो है वो आईपीएल के बाकी मैचेस में रहे, ठीक है, और फोकस हमारा शिफ्ट ना हो। तो वैसे भी ये सेम बातें उन्होंने सीजन शुरू होने के पहले भी शायद एक पॉडकास्ट में कही थी कि अगले सीजन से पहले तक मेरे पास कम से कम, अभी उन्होंने 3-5-6 महीने कहे हैं, उस पॉडकास्ट में वो 10 महीने बोल कर आए थे कि 10 महीने हैं, आराम से डिसीजन लूंगा, आराम से देखूंगा कि हाँ बॉडी कैसे रिएक्ट करती है और कैसे है। एक तो मैं पंच लाइन एक भी है उसमें, उसमें पंच लाइन भी है। उन्होंने बोला कि अगर परफॉर्मेंस के लेवल पर ही रिटायरमेंट होने लगे तो कुछ क्रिकेटर्स को शायद 22 साल की एज में रिटायरमेंट अनाउंस कर देना चाहिए था। बिल्कुल, it depends. I have 4 to 5 months to decide. There is no hurry to decide. Every year, it's 15% more effort to keep the body fit. Not to forget, it's professional cricket. It's important to see what kind of hunger I have enough time. I'll enjoy a few bike. I'm not saying I'm done. I'm not saying I'm coming back. देख रहे हैं, मतलब यही है एमएस धोनी की, एमएस धोनी का अंदाज कि मैं जा भी नहीं रहा हूँ और मैं जाऊंगा भी नहीं। कुछ इस तरीके की बातें हैं। अब बाकी भाई तुम्हारे ऊपर है, तुम सोचते रहो, मेरे को क्या लेना देना। Well, coming back to the Sunrisers Hyderabad versus Kolkata Knight Riders game. Before we wrap up this session, let's have a final look at the playing 11s of both the teams. प्लेइंग 11 सनराइजर्स हैदराबाद की बात करूं तो अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, हेनरिच क्लासन, अनिकेत वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, अभिनव मनोहर, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट and Ishan Malinga, because Sunrisers Hyderabad are unchanged for tonight's clash. And playing 11 of Kolkata Knight Riders, the big change: Quinton de Kock comes in, Sunil Narine, Ajinkya Rahane, Manish Pandey, Rinku Singh, Andre Russell, Ramandeep Singh, Vaibhav Arora, Harshit Rana, Anrik Norkia, Varun Chakravarti. बिफोर आई रैप अप दिस सेशन, आप दोनों से एक एक फाइनल कमेंट। अमर, स्टार्टिंग विद यू, व्हाट डू यू थिंक नाउ दैट सनराइजर्स हैदराबाद have won the toss, and what is going to be the first inning score, because they are batting first in Delhi? Uh, I'm expecting runs, quite a bit of runs to be scored. Not gonna lie, I'll be disappointed if it's not a 400 run aggregate, considering the strength of both these sides. But yeah, that being said, I'm also interested to see how Norkia comes in because he hasn't had much of a go this season. So it'll be interesting to see whether his pace can really mess things up for the SRH batting unit. So. Uh, yeah, I mean, just want to see a good game between these two sides. Because, I mean, I don't want them to take it a bit if it's a dead rubber. So I just want to see a cracking contest here between these two guys, and let's see how it goes. I hope there's some fire and whatnot between these two sides, considering they played in the final last year. So yeah, let's see how it goes. अनिमेश, आपका क्या प्रेडिक्शन रहेगा सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर, और उस स्कोर को क्या आज कोलकाता नाइट राइडर्स पार पा पाएगी? बिल्कुल, मुझे लगता है 190 के आसपास जाएंगे ये, और 200 मतलब ठीक है, उसको टच कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है आज केकेआर की तरफ से एक फायर पावर देखने को मिलेगी और आज के मुकाबले में केकेआर जीत सकती है इस मुकाबले को। इस उम्मीद के साथ मैं मुकाबला देख रहा हूँ। हालांकि अभी शुरुआत, पहला ओवर तो कुछ खास नहीं रहा था यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, लेकिन सेकेंड ओवर्स में चार्ज लिया यहाँ पर। और जितने भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स वापस आए आईपीएल 25 के रिजम्पशन के बाद, तो उनके बल्ले से परफॉर्मेंस निकल रही है। आज मुझे लग रहा है ट्रेविस हेड के बल्ले से परफॉर्मेंस निकलेगी। हालांकि केकेआर की तरफ से किस तरीके की फायर पावर देखने को मिलती है, लेकिन मुझे लगता है फिर भी केकेआर आज मुकाबला जीत सकती है।
चलिए देखते हैं केकेआर आज का मुकाबला जीत पाती है या नहीं, या फिर सनराइजर्स हैदराबाद बैक टू बैक एक और विक्ट्री रजिस्टर करती है। ये इन सारी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आफ्टर द गेम इन द पोस्ट मैच सेशन। सो आई रिक्वेस्ट ऑल आवर व्यूअर्स टू स्टे ट्यून एंड रिटर्न टू आवर पोस्ट लाइव सेशन व्हेन वी विल गेट बैक हियर टू डिस्कस अबाउट द SRH versus KKR post match the match results and the player of the game and all those factors. So but for now, it's that's all from my side. And thank you, Animesh, and thank you, Amar, for joining us. And as I said, we will be back soon after the game. But for now, it's a goodbye from my side. Take care.